Hello everyone, welcome to TOI Digital, your guide to all that's happening in the world of Indian cricket. Beyond the Boundary is the name of the show. We've got Nitin Naik who joins us from Mumbai. Joining us from NCR is Pratyush Raj. And joining us from Colombo is one and only Sahil Malhotra. Welcome to the chat, everybody. I'll start off with Sahil Malhotra since he's live from Colombo, as his Ashton says. Sahil, what's the update from Colombo, from ground zero? Exhausting day, Chandresh bhai. मतलब hello everyone. First of all, very exhausting day. 10:50 is when the team arrived here. बहुत गर्मी थी, 10:05 पे गर्मी थी, बीच में 10 मिनट का बारिश का स्पेल हुआ, and then humidity peaked. And Sri Lanka heat plus humidity conditions are very very difficult. Those 3 hours, 3.5 घंटे जो उन्होंने ट्रेनिंग किया, वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत गर्मी थी और बहुत ह्यूमिडिटी थी यहाँ पे. But I think they are like kind of leaving nothing to chance right now the way they are preparing for this test. They have been at this ground for the last 6 days now. 3 practice sessions, 3-day warm-ups, और कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगा कि कई बार होता है ना आपको एक बिल्डअप ऑफ अ टेस्ट सीरीज में या टेस्ट मैच में एक हल्का दिन मिलता है where you see people just ticking the box, just keeping it easy. Probably a batter won't bat that much, a bowler won't bowl that much. So except the fast bowlers, which is quite understandable, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार एंड मोहम्मद सिराज, सारे खिलाड़ी आज यहाँ पर थे और सबने इक्वल हार्डवर्क किया है, फील्डिंग से लेकर बैटिंग तक. मतलब एड्रियन ने इतना दौड़ाया है आज सबको कि मेरे को तो डर लग रहा था एक आध का हैमस्ट्रिंग खिंच जाएगा आज. प्रॉपर शटल रन चल रहे थे विच लास्टेड लाइक 14-15 मिनट्स, टाइम्ड शटल रन, ओके, एंड इट वाज हॉट टू इवन वॉक. सो I think they're putting in all the hard work, and Nitin bhai and me were talking whether it's more than the required hard work, but हाँ, hard work तो बहुत हो रहा है. And good news, Sarfaraz has joined the team. He was all smiles, मतलब कान से कान हंस रहे थे यार वो उतरते हुए. मतलब एक ऐसा होता है ना किड इन अ कैंडी शॉप कि, और वैसे ही फिल्मी आदमी बहुत है वो, बॉलीवुड पिक्चर देख के इंस्पिरेशन है उसका लाइफ के हर फेज का. तो वो एकदम ऐसा जब उतर रहा था तो मेरे को लग रहा है उसके मन में वो MS धोनी का थीम सॉन्ग चल रहा था, क्योंकि वो इतना मुस्कुरा रहा था, सबको मिला, फेमिलियर फेसेस देखे उसने और फ्लेक्स करके अपना बाइसेप भी दिखाया. तो ऑल इन ऑल अ गुड डे, बट अगेन आई थिंक बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है उन्होंने, and they get a well deserved rest when they travel tomorrow to Goa. So one thing, has Sarfaraz changed his dietary preference? I don't know about that, but he clearly has worked a lot on his fitness. I'm saying in terms of weight, Middle Eastern food. हाँ, वो कबाब तो अब उनको कबाब शॉप्स पे तो अब शायद नहीं जाएंगे. अब कबाब तो नहीं खाएंगे ना, अब तो नहीं खाएंगे. वंस बिटन थ्राइस शाय वाला सीन हो गया अभी. एंड वो सब छोड़ो यार चंद्रेश भाई, अभी मतलब आई थिंक इट्स टाइम टू सेलिब्रेट हिम. मतलब that it has been very unfair whatever has happened with him. If the reasons which we were told or given to believe कि हाँ ये वजह है सरफराज का टीम में ना होने के लिए, तो भाई हार्श वर्ड्स बोल रहा हूँ, बट उस हमाम में तो सारे क्रिकेटर नंगे हैं. उसके अंदर आप एक को सिर्फ सिंगल आउट नहीं कर सकते. कन्वीनियंस हो गया था वहां पे कि सरफराज खान को हटा दो. और इसका सीक्वेंस बहुत इंटरेस्टिंग है. अभी सब पूछ रहे हैं कि ये सरफराज आया तो आया कहाँ से. मैंने सीक्वेंस बचा के रखा हुआ था, प्रत्युष ने कल मना किया अभी मत लिखो, जब खेलेगा उससे पहले लिखेंगे, बट बोल देते हैं क्या फर्क पड़ता है. सरफराज को इंटीमेशन चला गया था कि तैयार रहो, और वो नजर थी अगले साल बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पे, क्योंकि वहां पे एक ऑफ स्पिन का थ्रेट था जो मैनेजमेंट को दिख रहा था, और वो चाहते थे कि नंबर 3 और नंबर 6 पे कोई एक ऐसा बैटर रहे जो एक तो दोनों पोजीशन खेल पाए और स्पिन के अगेंस्ट, खासी ऑफ स्पिन के अगेंस्ट इफेक्टिव हो. इसीलिए सरफराज को बोला भी गया कि आप डोमेस्टिक में भाई साहब ऊपर बैटिंग करिए. 5-6 पे आपने 1000, 1200, 1500 जितने भी रन किए, इट इज ऑल गुड. वी वांट यू टू स्कोर द टफ रन्स एट 3 and 4 when the ball, I know the SG ball does a lot even when it loses shine because the seam is that pronounced, but आप 3-4 पे जो डिफिकल्ट रन्स करोगे मुंबई के लिए इन एलीट ग्रुप, दैट विल होल्ड अ लॉट ऑफ वेट. तो वो प्लानिंग चल रही थी ऑलरेडी, क्योंकि स्पेशलिस्ट बैटर्स का तो अकाल पड़ा हुआ है ना एनसीए के अंदर और इंडियन क्रिकेट में इस टाइम. आपके पास नेक्स्ट नाम ऋतुराज गायकवाड़ है, फिर शेख रशीद है. सो मच सो कि ऋतुराज गायकवाड़ के रन नहीं आते इंडिया 8 ओवर्स में भी, कि शेख रशीद वाज वेरी क्लोज टू जॉइनिंग द टीम इन कोलंबो बिकॉज ही वाज योर ओनली ऑप्शन अवेलेबल अगर आप सरफराज की तरफ नहीं जाते. तो ये चीजें डिस्कशंस में ऑलरेडी थी, एंड दैट एबिलिटी ऑफ सरफराज टू टेक डाउन स्पिन, और जो उसमें एक रन बनाने की कला है, वो रन कहीं भी बना देगा. वो मैदान में बना देगा, एस्ट्रो टर्फ पे बना देगा, गीली विकेट पे बना देगा, सीमिंग विकेट पे बना देगा. वो चालाक है.
वो चालाक खिलाड़ी है, वो मैदान का खिलाड़ी है, और कुछ भी बोलो उसके अंदर वो इंस्टिंक्ट है कि So रन फिर कैसे बनाने। इतना नहीं, बट साहिल, नितिन एंड प्रत्युष, आई विल कम टू यू इन अ मिनट बिकॉज साहिल Yeah, का yeah, no लाइट चला issues. जाएगा. आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड इफ ही वाज सो मच इन द रेकनिंग, व्हाई वाज ही नॉट विद द इंडिया ए स्क्वाड लास्ट मंथ? That is something which the selectors need to answer. By management, I don't mean the selectors. I mean the captain, coach, and people who take the calls in the dressing room. I don't mean the selectors. Selectors का तो मॉडल आज भी आप पूछोगे तो सिंपल है. If you want to understand how Indian selectors work, you look at India A, because that is going to be your stepping stone for India. That is why आकिब नबी को लेके जितना मर्जी शोर मचाओ, आकिब नबी आए गुरनूर बरार के बाद ही, क्योंकि एक सीक्वेंसिंग के अंदर गुरनूर बरार को वो ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके थे. सिलेक्टर्स उसी उस पे चलते हैं, बट अभी मैनेजमेंट डेस्परेट थी, आपकी टीम मैनेजमेंट वाज डेस्परेट, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर किसी का निगल हो जाता. अब जैसे शुभमन को रिंग फिंगर में इंजरी हो गई कैच पकड़ते हुए, फिर एक बार नेट में और बॉल लग गया. अब 3 साइड आर्म स्पेशलिस्ट को अगर आधा घंटा फेस करोगे, अगर साइड आर्म को किसी ने फेस किया लाइफ में तो समझेगा वो एक ही बॉल साइड आर्म गुड लेंथ से ऊपर भी कर सकता है, नीचे भी कर सकता है, एंड इट्स अ रोबो आर्म. नो मैटर हाउ मच यू परफेक्ट इट, एक और एक्सटर्नल एलिमेंट है जो हमेशा इन्वॉल्व रहता है, एरर परसेंटेज रहता है, इंजरीज का स्कोप रहता है. तो यहाँ पे अगर आपका कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता, मैं कह रहा हूँ ध्रुव जुरैल हो जाता, केएल हो जाता है, साई हो जाता, आप किसको लेके आते? ईश्वरन को आपने एक टेस्ट मैच नहीं दिया, यश राठौड़ आपके पास नेक्स्ट बैठे हुए हैं, आर स्मरण को आपने इंडिया ए कॉल नहीं दिया जो 950 रन रणजी ट्रॉफी में करके आया है. दिल्ली के 2 लड़के आयुष दोसेजा, सनत सांगवान इंडिया ए में नहीं थे, तो वो आपके पास रेडी रिप्लेसमेंट्स नहीं है. तो बचे सरफराज खान. Ruturaj Gaikwad played 3 innings for India A against Sri Lanka. He was a royal disappointment, even in the limited over series, where he replaced Riyan Parag to become the vice captain. पहले मैच में 100 आया, उसके बाद just starts thrown away. So Rutu did not have the volume of runs, वरना Rutu वापस आते. तो आपके पास सरफराज एक ऐसा ऑप्शन बन गया यार, इसके दिमाग में भी क्रिकेट का कीड़ा है. ये इंटरनेशनल क्रिकेट 7 मैच खेला है, 1 शतक है, 3 अर्धशतक है, 37 का एवरेज है, एक बढ़िया 100 लगाया हुआ है, डेब्यू में 50 किया था राजकोट में अच्छे इंग्लैंड अटैक के सामने, तैयार है प्लेयर. इंडिया ए के लिए लास्ट ईयर इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट बहुत अच्छी पारी खेल के आए थे, उसके बाद मिस्टीरियसली आपको कहीं दिखे ही नहीं. तो मिस्ट्री असाइड, आई थिंक सरफराज वाज योर रेडी ऑप्शन एंड सेफ ऑप्शन राइट नाउ, जस्ट लाइक सारांश वाज, जस्ट लाइक आकिब नबी वाज. आपने रिवॉर्ड ना सारांश को दिया है ना आकिब को दिया है, क्योंकि आप आगे नहीं दोगे. कम न्यूजीलैंड जब सारे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे, आपको सारांश और आकिब नबी पैकिंग ऑर्डर में दिख जाएंगे वो कहाँ पे है. अभी आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आप यू नो दैट सेइंग ऑन अ बार व्हेन यू सिट एट अ बार और बोलते हो गिव मी द फर्स्ट अवेलेबल ड्रिंक. सो ये वही वाली बात है, गिव मी द फर्स्ट अवेलेबल रेडी प्लेयर, दैट इज सरफराज. नितिन, प्रत्युष और मुझे पता नहीं इसके बारे में, ये लाइन के बारे में. कौन सी लाइन के बारे में? ये जो आप बार में बैठ के, नो, I have been having a lot of lime sodas without sugar यार. That's your first available drink. Where are you going, Chandresh bhai? I know it is Sri Lanka, but no, please, you are misleading everyone. You are like, yeah, I will not tolerate all this. Yeah, आप मेरे पे accusation लगा रहे हो यार. My family watches this show. What will they think about me? मुझे एक बात बताना कि will Sarfaraz play? No, I don't think. We were discussing before he joined. So आज सेंटर विकेट पे पीछे मैच सिमुलेशन हुआ. So कल गौतम, सितांशु कोटक और मॉर्ने मॉकल ने जाके थोड़ा इंस्ट्रक्शन दिया, थोड़ा स्क्रफ अप किया सरफेस को टू मेक इट अ वेरी डे 4 काइंड ऑफ पिच. और मैंने एक वीडियो फीचर किया है TOI स्पोर्ट्स के लिए, वो कुछ ही देर में जाएगा. आपको पिच का क्लोज अप लुक मिलेगा उसमें, where I have shown parts where there are cracks, there are areas which are very dry. So simulation हुआ, everyone batted in pair. So Jaiswal, Rahul would bat together, change strike. Similarly, Gill and Padikkal, and Rishabh Pant and Dhruv Jurel, and then Kuldeep, Manav Sutar and the rest, Ravinder Jadeja etc. सरफराज ने बैटिंग शुरू किया प्रैक्टिस नेट में. लास्ट में जब सिर्फ नेट बॉलर्स डाल रहे थे, तो कोटक साहब जो हमारे नेट पूरा संभालते हैं, कोटक साहब ने आवाज मारी. सरफराज बालकनी में जा चुका था, जो एनसीसी का बालकनी है वहां बैठ के देख रहा था वो. कोटक साहब ने इशारा किया, सरफू आजा थोड़ी देर कर ले. तो वो लास्ट में से 10-12 मिनट बैटिंग कराया. तो अगर ऐसा प्लेइंग 11 प्लान में रहते तो आई थिंक आपके मैच सिमुलेशन के अंदर तो कहीं ना कहीं वो फीचर करने चाहिए थे. बट अगेन, फनियर थिंग्स हैव हैपेंड इन इंडियन क्रिकेट, सो आई विल काइंड ऑफ वे माय वर्ड्स वेरी कॉशियसली बिफोर टॉस इन गॉल. एंड अभी 3 नेट सेशंस और हैं गॉल में. मे बी आपको पिच एकदम खड्डा दिख जाए वहां पे, कि एकदम रैंक टर्नर दिख जाए, जब पता चल जाए बिल्कुल ड्राई है,
तो maybe you take that call, because Dhruv Jurel, for whatever he has done for India A, those performances haven't translated into meaningful contributions for Indian team, even when he's persisted as a specialist batter. So that's a sign of concern, क्योंकि इंडिया ए के लिए वो अभी भी एक 150 रन की पारी खेल के आए हैं, एक 60 और नॉट आउट करके आए हैं, तो कंडीशंस जानते हैं, और दोनों मैचेस गॉल में ही हुए थे, तो ऐसा नहीं है वो कंडीशंस नहीं जानते. बट अगेन, वो रन इंडिया के लिए करोगे तो ही बड़े खिलाड़ी बनोगे. ओके, फिटमॉन्ग कह रहा है साहिल भाई हैव रिवील्ड योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, मतलब आप इसके बाद कहाँ जा रहे हो उसके बारे में आपने बता दिया अभी अभी. अरे वो तो मेरे बताने से, बिना बताने भी पता चल ही जाना था ना. मैं कोलंबो तो रहूंगा नहीं, गॉल ही जाऊंगा ना जब टेस्ट गॉल में है. हाँ, और प्रियांशु कह रहे हैं साहिल भाई कमबैक स्पेशलिस्ट हैं और डीडी सर रिटायरमेंट स्पेशलिस्ट. Okay, one last any question that Pratyush or Nitin want to ask Sahil before we let him go? Yeah, I mean, that's what I was asking him before we all came online. That and Chandresh, even you can weigh in on this, having covered so much. I mean, are there fears that they are overdoing it? That's my only worry. That this are they being too intense, or has there been a mandate from the top that the impression that people are getting is optional nets, and people are taking their spots for granted, and so give the impression that everyone means business. So they finished a 3-day game yesterday, and normally post a game there's a day off, but Yeah. But they straight away again jumped into a 2.5-hour practice session, and it was not an optional session. So are they overdoing it? No, I think not even 2.5 hours, well over 3 hours. मतलब 10:50 से आप पकड़ो 3:30 पौने 4 तक they left, and around 3:55 after I was taking departure shots, so everyone was like easing out of the facility. And मैं बोल रहा हूँ आपको, वो एड्रियन के साथ यहाँ पे शटल रन्स हो रहे थे. Even I thought कि it will be a optional kind of session. We also came a bit light in mentally कि यार 4-5 प्लेयर आएंगे. मेरे को मैक्स लगा सरफराज आएगा, शुभमन आएगा, क्योंकि जिनका वॉल्यूम ऑफ बैटिंग उतना नहीं हुआ लास्ट 2-3 दिन में. बट सीइंग जडेजा डू व्हाट ही डिड, कुलदीप यादव बॉलिंग फॉर मोर देन 2 आवर्स नॉन स्टॉप. कुलदीप ने उसके बाद बैटिंग भी करी आधा घंटा. Kuldeep was probably the only player except Saransh who took high catches also after that with the new fielding coach. So वो जाते हुए मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई क्या हो गया, तो उसने बोला मेहनत तो अब करनी पड़ेगी हम सबको. मैं वो तो मजाक कर रहा था, बट मैं वैसे बोल रहा हूँ कि इतना ये लोग, एंड तनुष कोटियान एंड दिस गाय शिवांग वर सिटिंग, उन लोगों को नेट बॉलिंग नहीं मिला. तो मैंने उन दोनों से भी बात करने की कोशिश करी, गर्मी समझने की, क्योंकि दोनों टीम के साथ ट्रैवल्ड है, बात होती है. तो they were also saying that this is uncomfortable heat. This is not like the kind of heat which we are used to back home. This is uncomfortable heat. So I think credit to them for doing what they did. Everyone, Jaiswal, KL, Dhruv, कीपिंग नहीं कराई thankfully. कीपर ये लोग लेके आए थे आज, लोकल कीपर था, तो कीपिंग उस बेचारे को 3 घंटा अकेले कराया. एक लोकल यहाँ क्लब का कीपर था, वरना ध्रुव जुरेल और या ऋषभ में से अगर कोई कीपिंग करता तो आज तो मतलब बैंड बज जाती उनकी. इट वाज दैट हॉट. बट दे आर लाइक, मैंने नितिन भाई को शो से पहले बोला, चंद्रेश आप थे नहीं तब, 6 दिन लगातार ये लोग इस ग्राउंड पे हैं. 4 तारीख को आए और 5 तारीख से लेकर अब आप देख लीजिए लगातार 6 दिन ग्राउंड पे आए हैं. एक भी दिन ब्रेक नहीं हुआ है. कल एक सिर्फ ट्रैवल डे का ब्रेक होगा, और परसों आप इनको फिर नेट में देखेंगे, क्योंकि 3 ही नेट सेशन गॉल में आपको मिले हैं. उसके बाद जब भी मैच खत्म होगा आप फिर कोलंबो यू विल हिट द एसएससी नेट्स, बिकॉज एसएससी या और एनसीसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट एक टेस्ट मैच अरीना एंड अ प्रैक्टिस क्लब ग्राउंड इज कम्प्लीटली डिफरेंट. सो yes, they are stepping it up, but I don't know whether that's optimum right now, because we are yet to even enter preparatory mode for a test. अभी सीरीज वाला फीलिंग आपको कल परसों से आना शुरू होगा. प्रत्युष, आपके पास कोई सवाल है साहिल के लिए? नहीं, आई थिंक सारा कवर्ड ही है, बोल दिया सब कुछ. अच्छा, ये पवन भारद्वाज कह रहे हैं साहिल आपका हेयर फ्रंट हेड पर ऐसे कैसे राउंड राउंड हो गया? नॉर्मली इंडियंस डोंट हैव फ्रंट हेड राउंड हेयर स्टाइल. राउंड तो मेरा हेयर ही नहीं है भाई, मेरा तो सीधा बाल है भाई.
कैप पहना हुआ है सुबह से, क्योंकि नहीं पहनेंगे तो ऊपर से ऐसा लगता है किसी ने स्ट्रॉ डाल के आपका सारा एनर्जी निकाल लिया है, तो वो स्ट्रॉ के बीच में एक बैरियर रखा हुआ है। अच्छा, कल गुरु गैरी आए थे ग्राउंड पे, क्या कहा उन्होंने? अरे वो जबरदस्त, मतलब कल बात नहीं हो पाया हमारा, मतलब क्या पर्सनालिटी, मतलब आप लोगों ने तो चलो उनका पीक कवर किया होगा इंडियन क्रिकेट के अंदर, बोथ यू एंड नितिन भाई, बट मुझे अभी भी याद है, मैं इधर प्रेस बॉक्स ओपन सा ही था, प्रेस बॉक्स क्या ओपन, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर 4 टेबल लगा दी, 2 पंखा लगा दिया, बिठा दिया हम लोग को, 4 पानी का बॉटल देके, तो हम बैठे हुए थे, और वो एक पीरियड होता है मल्टी डे मैच में 2:30 से 2:45 बजे, बहुत एक मीठी मीठी नींद आने की कोशिश करती है, पर आप उसको भगाने की कोशिश करते हो, तो हम उसी फेज से जूझ रहे थे। जूझते जूझते मैंने देखा एकदम से ऐसा अनईजीनेस सा कुछ हुआ, ये क्या हुआ है एकदम से सामने, फिर वही MS धोनी का गाना मेरे अंदर गूंजा, फिर वही गैरी इफ अ विकेट फॉल्स आई थिंक आई शुड गो नेक्स्ट, नो इट्स मुरली, क्योंकि सामने गैरी कर्स्टन साहब थे, एंड एकदम लाइक नॉर्मल उन्होंने गुरनूर बराड़ से बात की, अगेन GT कनेक्शन, मानस सुतार से बात की, वहां जाके रघु GT से बात connection. की, but he was decent enough, and I really liked it about him. He did not go near the 2 dugouts. He could have, वो गौतम से मिल सकते थे, वो और बाकी कोचेस से मिल सकते थे, श्रीलंकन प्लेयर से बात कर सकते थे, उन्होंने अपना दायरा देखा, राउंड मारा, सेमी सर्कल कंप्लीट किया, वापस आए, क्लब के अंदर ऊपर एयर कंडीशन में बैठे, हम लोग वेट करते रहे, नीचे आएंगे तो एक आध कोट मिल जाएगा, कोट नहीं मिला क्योंकि उनकी गाड़ी किसी ने मार दी थी पार्किंग में, तो वो नाराज थे, वरना हमें था 1-2 कोट मिल जाएंगे, हमारा भी दिन बन जाता, बट वो आए, उन्होंने अपना आई थिंक 1 से 1.5 घंटा यहाँ पे बिताया होगा जब इंडिया बॉलिंग कर रही थी, एंड दैट वाज अ पीरियड जडेजा वाज बॉलिंग रियली वेल इन द आफ्टरनून यस्टरडे, तो ही हैड अ क्लोज लुक, जडेजा ने बॉल डाला, और कौन डाल रहा था, आई थिंक गुरनूर डाल रहा था उस टाइम पे बॉल जडेजा के साथ, So, उन्होंने 1-1.5 घंटा स्पेंड किया। गैरी की एक बात बताता हूँ कि गैरी को आदत है वो भाग के जाते हैं ग्राउंड। मुझे याद है जब वो दिल्ली नहीं, गाड़ी डेयरडेविल्स के लेके, हेड कोच, अभी हो सकता है SLC ज्यादा पैसा दे रहा हो BCCI से, नहीं यहाँ नहीं, गाड़ी वो मिल गया। जब वो दिल्ली डेयरडेविल्स के कोच थे तो वो रायपुर में मैच था, नहीं रायपुर में मैच था, वो स्टेडियम से ग्राउंड भाग के जाते थे, तो वो भाई रोज आपने सुबह प्रूफ कर दिया भाग के GMR जाते के थे। पास पैसा नहीं था, आपने प्रूफ कर दिया GMR के पास पैसा मैंने नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा, आप मतलब था। अपने आपने ही तो तरफ से बोला, बोल रहे हो। अब आप बोल रहे हो इंडियन क्रिकेट में SLC के पास पैसा है, वो गाड़ी में आ रहा है शॉफर वाला, To AC चल quote रहा a है। former BCCI president, don't put mouth in my words. या Chandresh would know वैसे who I'm कल talking about. वैसे कल जो COE का इनॉग्रेशन हुआ उसमें तो सैकिया साहब ने कह दिया ना कि 2019 से पहले तो हमारे यहाँ पे कोई काम ही नहीं हुआ, लैंड लेके बैठे हुए थे 15 साल, हमने आके मतलब हमारे से पहले जो टीम थी उन्होंने आके किया, उसके पहले तो किसी ने कुछ काम ही नहीं किया, लैंड जाने वाला था हाथ से, तो मतलब एक साथ उन्होंने सबको एक, मेरा बहुत मन था, मतलब आई रियली विश कि मैं कल हिस्सा हो पाता इस ऐतिहासिक दिन का COE में, क्योंकि मेरे पास इतने सवाल थे पूछने के लिए, इतने सीक्वेंसेस जो कल बोले गए कि ऐसे होता है, ऐसे फिटनेस रिपोर्ट आती है, मतलब मेरा तो बहुत मन भी था सैकिया साहब से पूछने का, लक्ष्मण साहब से भी पूछने का कि क्या ये कोच बनना चाहेंगे और क्या आप इनको कोच बनाना चाहेंगे। थोड़ा ऐसा कोई सवाल ही नहीं पूछता चंद्रेश भाई जैसा, जैसा चंद्रेश भाई अपने जमाने में पूछते थे। अभी वो मजा ही नहीं रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जमाना चला गया क्या? जमाना चला गया। नहीं नहीं, जमाना कहाँ गया। Across अच्छा, spheres. ये प्रियांशु का सवाल है, साहिल भाई, प्रत्युष भाई, श्रीलंका का टेस्ट स्क्वाड क्या सीरीज के बाद आएगा? आई थिंक दे आर डीलिंग विद सम अवेलेबिलिटी कंसर्न, सम फिटनेस कंसर्न्स, तो एक बार वो उन लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी, और ठीक है ना, अगर वो क्लियर है भी तो आपके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग ना, बिकॉज हमारे कोच साहब तो इंस्टिंक्ट पे ऑपरेट करते हैं ना, वो लास्ट, अरे ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन तो मैं आपको अपनी बताना भूल गया, इसके लिए मुझे पैट ऑन द बैक है। 3 दिन तक हेड कोच हमारे सिर्फ वीडियो एनालिस्ट के साथ बैठे हुए थे फर्स्ट फ्लोर पे, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला जाता है हम तो डेटा देखते ही नहीं है। हरी भाई के साथ थे यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे लैपटॉप लेके, KL राहुल तो खैर बहुत मेटिकुलसली प्लान करते हैं अपनी इनिंग को, तो वो तो प्रॉपर वीडियो देख रहे थे। गौती भाई बहुत देर, 3 दिन ऊपर बैठे हुए थे वीडियो एनालिस्ट के साथ फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा, एक आखिरी कमेंट बिफोर आई लेट यू गो, साहिल भाई आज स्मार्ट लग रहे हो, पार्टी शार्टी का प्लान है क्या? नहीं, उसके लिए तो पहले कपड़ा बदला जाएगा भाई, इन कपड़ों के अंदर मैं कहीं घुस भी गया तो मेरे को एंट्री नहीं मिलेगी। अभी मैं बता भी नहीं सकता इन कपड़ों के साथ क्या हुआ है सुबह से, सो अभी तो कुछ नहीं होगा, जो होगा 2 घंटे बाद होगा। वो फोरेंसिक के लिए तो नहीं देना पड़ेगा? नहीं भाई, वो सब नहीं सीधा लॉन्ड्री होगा, लॉन्ड्री। मतलब इतना पैसा दे रहे हैं?
टूर के लिए? अरे बहुत पैसा दे रहे हैं भाई, आपको भी चार्टर करा सकता है, आओगे? अभी अपार्टमेंट की ना घर जाके वीडियो भेजता हूँ, फिर जज कर हाँ। लेना कितना पैसा दे रहे हैं। तभी नितिन भाई ने जब पूछा ना कि होटल, व्हाट होटल यू आर स्टेइंग इन, मैंने बहुत हल्के हाथ रख के बोला, आई एम स्टेइंग इन अ सर्विस अपार्टमेंट। तो उसी से अंदाजा लगा लो अभी आप। Nitin, Times Internet is better than TOI newspaper. Oh, of डोंट course. पुट माउथ इन माय वर्ड्स। Exactly. चलिए, thanks a lot, Sahil. Go enjoy Thank yourself. you. Safe Last night in travels. Colombo. Safe travels. Bye. Safe. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye. Nitin, we have a few Yeah. questions from our subscribers. India faces a stern journey from Galle Test to the end of BGT. Is this WTC cycle virtually over for them? Yeah, as soon as they lost the South Africa series 2-0, I think it was over then and there. If they try and even win all the series, or even if they draw all the series from here, I think that will be a creditable achievement. With all the things that the team has been through, the coach has been through, the kind of test cricket that they have played even at home. You know how Chandresh, when we used to discuss about the bowling records of Jadeja and Ashwin, and अरे यार उन लोग तो घर पे तो विकेट निकाल ही देंगे, how we used to take those things for granted. Now we'll come to know what even the home wins meant. I think even the home wins now will be very, very difficult come Australia here. And that's why I think they brought Jadeja back in. I think they will need that experience even against Australia, with him as a batter and a bowler, somebody who can control, even if he can't get wickets, somebody who can give the bowlers, the captain, a degree of some degree of control, so that the fast bowlers can be rotated or the other bowlers can be rotated. Okay, one more thing. Syed Nizamuddin says Kuldeep Yadav has played just 18 test matches in 10 years. Nitin, that's a statement on Indian cricket. Across team management, sir. I'm not saying just. I think he played the most under the Dravid Rohit regime, if I'm Six not each. wrong. 6 each. 6 each, huh? 6 So each. yeah, 6 yeah, each. yeah. And even there, Chandresh, even there, I remember there was a test match in Chittagong in No, 2022. I think he played where one test match under Kumble. It's not 6 each. Yeah, The last Dharamshala. test match in Dharamshala. The debut. बहुत बड़ा एक debut. लफड़ा बन गया था बाद में. Yeah. And every time that he's won he's put in a player of the match performance, the next test he has been dropped. It's quite mysterious really, because Chattogram, I think he was the man of the match. Then next match in Mirpur, I think the team management picked Jaydev Unadkat after a 12-year gap. His first test was in Centurion in 2010. And 2022 he played again. So across managements he has been treated very poorly. It just shows the mindset of the modern coaching regimes, captaincy regimes, that not conceding runs is, I think, paramount in their mind, and they fear that a wrist spinner kind of does not allow them the control that a finger spinner gives, because he has got a fabulous defensive technique. So it's not that he can't bat. He can definitely bat. It's just that he can't hit the ball. But he can very well hold an end together. And the Ranchi test and that partnership with Dhruv Jurel in the first innings, it's proof enough. Okay, there's one more comment. Nitin, will BGT in India be final frontier for the likes of Smith, Lyons, Stark, Patty? This cycle, I think, is probably will be era defining for this set of players. I was just checking, sometimes when I don't get sleep at night, I just start banging something on the keyboard, and I was just figuring out last night that Josh Hazelwood hasn't been a part of an Australian team. It's so strange, huh, Chandresh? Josh Hazelwood hasn't been a part of an Australian team that has won a test series in South Africa, in India, and in England. So, and that's the
chance that he has now, because the Australian team is going to play all these teams in their homeland. And Cummins, Smith, Hazelwood, and Stark and Lyon, for all their great records and the legacy teams that they have been a part of, they have never featured in a Test series victory in India. So that is the big challenge for them. And if they win the series in India, and in, because they're playing, I think, 22 tests across a period of 14 months, if you combine the Ashes also. If they manage to win the series against India and the Ashes in England, I think Pat Cummins, I think, will probably go down as a greater captain than even Alan Border. Pratyush, Introspect says Jurel seems Bradman of India A cricket, but he's failing to cash in an opportunity at Test level. Will he be backed for both the Test matches? और एक सवाल है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का. Jurel has done nothing after his debut series. I think he has done well for the India. That's why he's getting picked every time. He got And it's 100 in just Ahmedabad against West Indies. yeah, West Indies and in Sri Lanka as well. He's done well. So Ithora, I think we sometimes forget. There's a process that he has done continuously. He has scored runs. Coming back, whether he'll get, I think he'll get both the matches here. If he's fit, I think he'll get both the matches. And दूसरा question क्या था? He is Saying- मतलब वो वही है कि वो जुरेल के बारे में. Will he be back for both the Test matches? Yeah, he will. I think so. I'm sure this management will give him that this two test is, you can say that, make or break for Dhruv Jurel, because if he'll fail to perform here, then फिर आपको न्यूजीलैंड में फिर and for BGP he'll have to look at someone else. अच्छा तो ये ऑस्ट्रेलिया सवाल खेलने है. में तकलीफ हो रहा है उसको शायद. He got, even Simon Harmer, I think, got him out 3 times out of 4 innings against South Africa. And very soft dismissals. मुझे problem वो नहीं है. Bad. I mean, very soft dismissals. इस तरीके से वो out हो रहे हैं, and very bizarre the way he batted against England in that series. Looked at ease. अभी जैसे आपने बोला ना नितिन sir at the start of the show, that is India overdoing it. When you watch Dhruv Jurel at the nets, he looks like $1 billion. जब वो बैटिंग करने आते हैं तो मुझे लगता है sometimes he is like overdoing it. Like, I don't know. I mean, I hope he is a very good talent. I hope he finds some international run. Okay. क्या ये सीरीज पंत के लिए मेक और ब्रेक होगी प्रत्युष? नहीं नहीं. I mean, tell me one, like, अभी बहुत अच्छी बात नितिन सर ने बोली कि we will be like अच्छा अश्विन एंड जडेजा विकेट ले रहे हैं. Who is your, I mean, if you want to replace Pant, but who is your next best wicket keeper? I mean, we are unable to find a genuine off spinner. सारा सिंगल स्पिनर नहीं है ढंग का. एक मानव सूत्र को लेके everyone is excited, but you have to remember that he is someone, he's talented, but there will come a time where he'll fail also कि दो से 3 टेस्ट में नहीं जब विकेट्स आएंगे. So I mean, and suddenly there's a problem, Nitin sir and Chandra. So there are no right-handed batters. All who are coming up are southpaws. Sai, Devdutt, Smaran. तो आपको जुरेल को खिलाना पड़ रहा है. He is a second backup wicket keeper. सरफराज को आपको लाना पड़ा, शेख रशीद को लाना पड़ा, and उसके बाद suddenly there is no one. आपको यस अब if you, I mean, विदर्भा के साइड आपकी तरफ भी आपको जाना चाहिए. I mean, मुखाडे and यस राठौर, you have to keep them ready. I don't know ऋतुराज गायकवाड़ as well, because I mean right-handed batters का अकाल पड़ा हुआ है. Okay. Quality right-handed batters. Priyanshu कह रहे हैं Nitin, what's your prediction for the series 1-1? Is his prediction? Vinayak says India will win 2-0. What's your prediction, Nitin? Ball, I'm not very sure, Chandresh. I think they'll win in SSC, but I'm not very sure about ball. In fact, I fear an Indian defeat in Gaul
if they 350 मारना चाहिए अगर पहला बैटिंग आया तो they have to Uh, score 350. That should be their benchmark. If they don't get 350, then they are in trouble. Okay, Rohan Kalita says if every international players play in India team, then how would domestic players get chance? Good point. Basically saying that अगर uh, वो India A में जैसे Devdutt Sai, particular Sai Sudarshan played, someone else could have got an opportunity instead of them. Nitin, do you agree with that? Yeah, good point. I think Dravid had that philosophy, right? Whenever he used to take the boys for these A-team tours, or when the teams used to come and play here, I think that's why these guys like Siraj and all got so many India A games, 16, 17 India A games he played before he was picked for that Australia tour. So yeah, I think that again, people who have played for India should not be a part of India A. mhm. That's what I feel. Once they've played for India, that's why I didn't really mind that comment from Ajit Agar. I mean, he was roasted online, especially. I mean, I have a lot of disagreements with the way Ajit Agarkar has selected teams of late, but that comment that he made, that it seemed very dismissive and disrespectful towards Sarfaraz when they said that. When he was asked why wasn't he picked for India, and he said we've already had a look at him, uh, and we are looking at someone else. I think that's what his quote was, Mm. and it was interpreted as being disrespectful. Maybe it came out that way. Often, perspective and context is lost when people quote that in their reports. Um, but I think what he meant was, I think we are looking at India A as a platform to groom the next line of players. So he's right here. Okay, Stat Brad says horrible 20 IPL, drunk post for land in Uttarakhand, then 28 of 68 while chasing an attainable target. What's wrong with Pant's mindset? Don't cast aspersions on a player, but you can talk about his cricket. Nitin, what do you make? Yeah, I got a little worried when I saw the language of that social media post, Chandresh. I he's been a cricketer who I've been very fond of, and in the department, whenever there has been a discussion around Pant, they have always referred to me as Pant ka vakil, because I've been a huge backer of Rishabh Pant. But when I saw that post and the way the awkward phraseology, the grammatical errors, the timing of when that post was put up, referring to it firstly as receiving it as a gift and then correcting himself and then saying, no, I would actually want to buy it. Plus the F bomb that he dropped when he was talking with Ian Bishop after that defeat where LSG failed to defend 220 against Royals. It shows a very cluttered mind. It shows a person who's dealing with a lot of insecurities, frustrations. I hope there is somebody around who he trusts. I think I'm so glad that he spent some time in Ranchi with Dhoni. I hope that there is someone around in this current dressing room, in this current team management, who can put an arm around his shoulder and they can just say, boss, you bat, but you value your wicket. Don't play the shots that you played in Melbourne and in Guwahati. But uh, but I would want. I think he needs an elder brother kind of a figure in this dressing room. Can put He him needs at a Rohit Sharma in that dressing room, Rohit basically. Sharma in the dressing room. Yeah, I'm a little Holds worried about him. the way things are going for him. Priyanshu is asking Pratyush Bhai, has Agarkar already selected his last squad as chief selector? पता नहीं I mean only अब September AGM के बाद ही पता चलेगा if they will win this series. So I mean still time now. Okay, and I'll request everybody, please don't keep posting again and again. So I will take everybody's question. Please give me time to scroll through. Ashwin is asking future of Jadeja after BGD, considering India is not qualifying for World Test Championship final. Will he continue after this WTC cycle? And Vaibhav Taragi says, I believe Ravindra Jadeja is going to be player to watch out for in this series. Thoughts, Pratyush? So one day I think I mean as office members are saying, Ravindra Jadeja as a bowler he's not looking threatening that much. With Ashwin, Jadeja was a different beast. Maybe as a batter he has become
he's taken his game for past 6, 7 years to different level. If he continues to perform with the bat and gives you 12, 14 holding overs a day, so I think abhi bhi India may, I mean, you can prepare someone, but as long as he's scoring runs at 6, giving you those wickets, odd wickets, so परफॉर्मेंस के हिसाब से होना चाहिए. इफ हिज परफॉर्मेंस इज नॉट दैट गुड, इफ अगर मतलब गिरता है फॉर्म तो ठीक है. अदरवाइज इफ इज डूइंग वेल, आई कांट सी अ पॉइंट जहां पे आप उनको बोलोगे कि यार बिठा दो. I mean, you have to respect. I mean, 89 tests खेलना is not an easy job. And to someone like Ravindra Jadeja, I remember like when he burst onto the scene, people used to say like, I mean, throughout the career, he has played his cricket against all against all odds. कहना तो थोड़ा ये है, but there were bits and pieces cricketer is not fit for this. He can only bowl in Indian condition. His batting is not that good. सिर्फ अपने लिए रन बनाता है, बट रन तो बनाता है, परफॉर्म करके तो देता है. Stat Brat has a question. Nitin sir, who will be your 3 spinners in Gaul? And again, someone else is asking, what's your playing 11 for the first test? So what's your thing? I'll go with the 3 spinners. Jadeja, Kuldeep, and Manav Sutar. I'll pick. I know people will say that why do you want to play two left arm spinners, two left arm finger spinners? I think, but both are different kind of left arm spinners. Jadeja and Sutar both are different. I still believe Jadeja in Gaul, in spin friendly conditions. I don't think you still have too many bowlers today who can bowl at 90 kilometers per hour and get that 2.5 degree turn, which which really troubles players. I mean, if you see his record, he's got Steve Smith 8 times, Alistair Cook around 8 or 9 times, Joe Root I think 9 times. So I think these are the when you bowl at that speed and get that 2.5 degree turn, very difficult, and he's very, very accurate. So I think Jadeja will do well. And yeah, these will be my 3 spinners, and I'll be tempted to play Sarfaraz instead of Jurel. Okay, Hastakshi Dingra says, Nitin sir, wondering why you are so optimistic about Australian team and their players. Hope our Indian captain and its players get the same positive support. I would be very happy, Hastakshi Dingra, to see an Indian team do well against Australia. But I think the Australians, yes, they haven't won a series in India since that 2004 series. But I feel that they will come very, very well prepared. Yeah, I think they have a fabulous pace attack. They have Nathan Lyon, probably one of an all-time great spinner. And they have these guys like Kuhneman and all, who can bowl that quickish finger spin in case India prepares the Indore kind of pitch again. So they have an attack for all conditions. And Travis Head, Steve Smith, they're all now India veterans. So that India alien factor has gone for a lot of these players. So I think that will be a factor. Okay, final question of the day, Pratyush. Before anyone else asks, he has a few questions. Will Bangladesh tour happen? Will Rohit Sharma play West Indies series? And Hardik Pandya trade update. बांग्लादेश टूर तो अभी गवर्नमेंट का ही है. आई थिंक हाई कमिश्नर they met today, so it will India's High come Commissioner from to Bangladesh, Dinesh Trivedi, met Bangladesh Prime Minister today. Yeah. So that's and second, Hardik Pandya, I don't think abhi kuch idea. I don't know. I mean, yes, there are rumors here and there, but wherever he'll go, he'll become captain. So आप खुद देख लो कप्तान किनको चाहिए in dire need. And क्या था एक क्या Rohit Sharma. Will he play the West Indies ODI? I mean, after that So century. basically, they're expecting the Bangladesh tour to not happen because Bangladesh tour पे भी 3 वनडे है उसमें. तो After नहीं होगी, सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं.
Pratyush? After that press conference from Hasina, I think it's a little difficult, no, Chandresh? Yeah, that is. But today the Indian High Commissioner met the Bangladesh Prime I- Minister today. Yeah, I know, but then if you see there, the release that came from there, they we were are very quite upset strong. about it. Yeah. They It were could very also be upset. that because the Bangladesh Prime Minister is supposed to come to India next month for the BRICS summit. Yeah, the big summit. Yeah. So it could be for that also. मतलब हम सोच रहे हैं कि वो सिर्फ पहला चीज बोलेंगे सर आप क्रिकेट टीम में Brick आ by सकते brick, brick by brick, we'll get to know. हैं। चलिए There is some on that tournament note, we are hosting together, right? Are we supposed Which to one? host some tournament together? 20, India Yeah, and yeah, 2030 So I hope Thank things you. get sorted. Yeah. 5 साल है। Anyways, if it is going to happen in India, the schedule will be announced in July 2031. So why are you worried? It's not like South Africa, Namibia, and Tickets Zimbabwe where will they be are sold. announcing the venue. Tickets will be sold when the game is still on, like it happened Yeah. with in Chennai with India-Australia No. match was on. No, the funny part is that South Africa, Zimbabwe, and Namibia have announced their venues at 1.5 years in advance. Yeah. They don't get the memo, I suppose. Yeah. चलिए on that, हाँ क्या कह रहे थे नहीं प्रत्युष? नहीं ये अरे बोलो अरे बोलो यार। मैं यहाँ नहीं कह सकता। कुछ बातें होती है जो लिविंग रूम में की जाती है, वो इधर नहीं बोल सकते। मैं बोलता हूँ आपको। ठीक है, मैसेज कर देना। चले, on that note, thanks a lot, gentlemen, for joining us. Sahil earlier, Nitin and Pratyush, please like, share, subscribe, comment, and also press the hype button and use the super chat to ask questions. That's it for today. We'll be back tomorrow. Until next time, take good care of yourselves. Good night and God bless. Thank you.